नमस्कार, मैं अशोक व्यास और जय हिंद के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है क्योंकि 26 जनवरी आ रही है और 26 जनवरी यानी भारत का राष्ट्रीय पर्व। तो भारत का ये जो राष्ट्रीय पर्व है, इसके साथ में भारत की तरफ जब हम अमेरिका में बैठकर देखते हैं और हमारे हृदय में जो प्रेम का सागर उमड़ता है और एक आनंद की लहर सी आती है, उसके पीछे क्या भारत वही भारत है जिसकी पहचान 1947 या 1950 से है, या भारत वो एक सतत प्रवाहित जागृत चेतना है जिसमें विश्व बंधुत्व की बात है। तो इस विषय पर while we are respectful to constitution, we also want to see how that essence of Indian identity, जो कि इंडिया शब्द नहीं भारत के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, वो प्रवाहित होता रहा है, क्यों उसकी तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक है। बात करने के लिए मेरे साथ एक तो स्वामी विवेकानंद के स्थान से आए हुए डॉक्टर दीपक नंदी जूम के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो पहले डॉक्टर साहब का मैं स्वागत कर रहा हूँ, नमस्कार। और मेरा सौभाग्य है कि वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष और भारत से प्रेम के लिए जाने जाने वाले हमारे मित्र प्रमोद भगत जुड़ रहे हैं। भगत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो भारत की भक्ति के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, तो बात क्योंकि हमारे लिए अनुभव की दृष्टि से भी अधिक वरिष्ठ हैं, सो आई विल बिगिन विद यू डॉक्टर नंदी जी। भारत, when I recollect, I am also reminded of महाभारत। तो भारत शब्द जो है वो प्रचलन में रहा है और उसका एक खास अर्थ भी रहा है। आप इसके बारे में थोड़े अपने विचार हमारे साथ बांटें, भारतीय चेतना के बारे में। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में बोलूं? जिसमें आप सहज हो। मुझे लगता है आप अंग्रेजी में अधिक सहज हो तो अंग्रेजी में, अदरवाइज हिंदी, इधर वे। तो द वे आई अंडरस्टैंड भारत is Bharat was brought, the concept was brought in over thousands of years by sages and munis who did meditation, who processed conversations between each other for thousands of years, at least for 15,000 years, before even they started writing the Rig Vedas. And they came with a concept how human beings could live in coexistence together with nature, and that whole spirit of living with nature, living together with peace, living have non-violence, being able to farm together, having a leader where the leader took care of the prajas, the rajas took care of the praja, that all those concepts were brought in, and this wonderful blessed land, what we call Bharat or India, became the land of knowledge, of secularism, of non-violence, of coexistence, and of peace. So, I think this was processed through thousands of years, and the different Vedas and the Upanishads talk about that, and about the principles of living, how you live with your spiritual life, how you live with God, how you take care of each other, how you take care of the family, and how you take care without using arms. Wonderful. So Dr. Nandi mentioned about the flow of knowledge. और एक बात में मैं जैसे देख रहा हूँ तो वेदों के बारे में प्रमोद जी हम कहते हैं वो अपौरुषेय हैं। तो वो जो अवधि आपने 15,000 बरस की वो मानते नहीं है शास्त्रीय दृष्टि से, पर उस तरफ हम नहीं जाएंगे। आई विल कम बैक टू जो कॉन्शियसनेस है भारत की। तो भारत की कॉन्शियसनेस के साथ में जब आप ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से वो कोई राजनीतिक भारत नहीं है जो आपके मन में है, आपके हृदय में है। भारतीयता का जो भाव है उसके बारे में आप अपने विचार बताएं। थैंक यू अशोक जी टू इनवाइटिंग मी इन ITV गोल्ड स्टूडियो। वेल, आपने सही कहा है, भारतीयता का मतलब ही है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं और पूरा विश्व हमारा परिवार मानते नहीं है। हमारे कर्मों में, हमारे वचनों में ये सारी चीज़ें हैं। और चाहे आप हमारे रामायण काल को देख सकते हैं, भगवान राम के काल को देख सकते हैं, कृष्ण के काल को देख सकते हैं, लॉर्ड बुद्धा के काल को देख सकते हैं,
और अभी रिपब्लिक डे भारत जो मना रहा है 74th रिपब्लिक डे 26 को, भारत के आज़ादी के पहले जो जिस समय भारत के ऊपर मुग़लों का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, और बाद में जब भारत आज़ाद हुआ फिर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, और उसमें इन चीज़ों को पूरा दर्शाया गया है। भारत के उस सारे जो निचोड़ क्रीम को, जो भारत की जो वैल्यूज़, हेरिटेज, कल्चर, पूरे विश्व को, इसलिए भारत को एक सेकुलर कंट्री के रूप में पूरा संविधान की रचना जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। और उसमें सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का प्रयास, जो आज के प्रधानमंत्री हमेशा चर्चा में कहते हैं, लेकिन वो निहित है। और उसी की वजह से मातृभूमि भारत में, मदरलैंड इंडिया में आज भी सभी लोग साथ मिलके रहते हैं। और भारत का विकास ही जो हुआ है, मतलब आज़ादी के बाद आप देखिए, आज़ादी के पहले तो जो हमारा जो कालखंड रहा, जिस खंड में हम लोग गुलाम थे अंग्रेज़ों के या मुग़ल का शासन था, जिसमें भारत के उस वसुधैव कुटुंबकम और भारत के सत्य सनातन की जो सबको एक्सेप्ट करने की जो हमारी जो रही है भूमिका, या हमारा जो नेचर रहा है, तो कुछ लोगों ने, कुछ बैड एलिमेंट्स ने उसको मिस यूज़ किया है। लेकिन जब हमारा संविधान फिर से बनाया गया, आज़ादी हमें मिली, तो सारी चीज़ों को फिर से निहित करके वही भारत जो पूरे विश्व का सोचता है। जो ये बात को लेते हुए नंदी जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ स्वामी विवेकानंद, who of course came to United States of America, and this famous speech at Chicago at World Parliament of Religion, we still remember, brothers and sisters of America. So Nandi ji, the point is, he is also looked up to even now, and would be looked up to for years to come, as someone who was a true representative of Indian spirit. और जो सिविलाइजेशन की बात जिस तरह से उन्होंने बताई, वो आज भी रिफ्लेक्ट हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं उसकी। तो आप ये बताइए कि कितना रिलेवेंट आप देखते हैं द टीचिंग विच वर शेयर्ड बाय स्वामी विवेकानंद इन द कंटेक्स्ट ऑफ टुडेज इंडियन सिचुएशंस। You hit the nail, absolutely, the hammer on the nail. Swami Vivekananda's main theme in the speech and the world religion was Hinduism is a religion which can assimilate all other religions. Bharat is a country जो सारे दुनिया का, whether it is Christianism, whether it was Islam, it is able to assimilate into it, take the good of all the religions and make it a part of our culture. That was the main theme of Swami Vivekananda's speech. That got reflected in the Constitution of India when B.R. Ambedkar wrote that India will be a secular nation. India will treat all religion equally. And that was one of the fundamental rights that was verbalized in our Constitution and written in our Constitution. And thereby, the principles of Swami Vivekananda, the principles of Hinduism, and the principles of the Bharat consciousness slowly merged into our current constitution and became the hallmark of the preamble for everything else to happen. So very well said, Pramod ji. जो सेक्युलरिज्म शब्द है वो बहुत अधिक प्रयोग में आता भी है और उसको महत्व भी दिया जाता है। आपने भी अभी कहा, नंदी जी ने भी कहा, और सबको अपनाने की बात उसका सार है, ऐसा माना जाए। पर वो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से अभी है, वो तो 70s में आया, जब निर्माण हुआ था तब इस रूप में नहीं था, लेकिन ये था कि सबको सहअस्तित्व की भावना के साथ रहना है, वो बना रहा है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा स्वतंत्रता के बाद में ये जो भारतीय चेतना जिसकी ओर हम बात कर रहे हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात है, उसको बनाए रखने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरह की शिक्षा पद्धति को भारत ने प्रमोट किया या अपनाया, उसका भी कुछ योगदान रहा भी है और रहना स्वाभाविक ही है। उसमें क्या आपको लगता है कहीं कुछ अलग ढंग से होता तो जो एक सांस्कृतिक विरासत है उसके प्रति
एक स्वाभिमान का जितना भाव होना चाहिए था वो रह पाया कि नहीं रह पाया, क्या आपका ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। आप जैसा अनुभव के बेस पे, क्योंकि ऐसा है कि हमारे जैसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं जो भारत को इतने वर्षों से देख रहे हैं, तो सेकुलर वर्ल्ड आप ठीक कहें कि 70 के पहले नहीं था, क्योंकि राम राज्य की जो परिकल्पना, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरा संविधान को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और उसके फ्रंट में ही भगवान राम का पिक्चर है, और राम राज्य का मतलब ही है कि भाई सभी अपने हैं। और वो जो सेकुलर की जो परिभाषा जो राम राज्य की दी गई थी, कहीं ना कहीं वो बीच में कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स की वजह से, कुछ वोट पॉलिटिक्स की वजह से, कि केवल हम ही जीतें, हमको सारा वोट मिल जाए, तो फिर वो जो वोट का जो डिवीज़न करने के प्रयास में जो इन लोगों ने जो प्ले किया है, तो उसका भारत को बहुत नुकसान हुआ है। भारत के उस पूरे सांस्कृतिक जो विरासत के ऊपर एक चोट हुई है, और उसमें सनातन और हिंदू, सनातन का मतलब तो भाई पूरा ब्रह्मांड है, पूरा हमारा पृथ्वी है, हम नेचर के हर चीज़ों को अपना मानते हैं और सभी का हम रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब कि ओनली ट्राइंग टू बी जस्ट गिविंग अ पॉजिटिव ऑल अराउंड द ग्लोब। लेकिन उस कुछ छिछले राजनीति की वजह से, जो सेकुलर को जो तोड़ मरोड़ करके, जो फिर बाद में जो पॉलिटिक्स के गेम की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। और अब लग रहा है धीरे धीरे वो चेतना लोगों में आ रही है, क्योंकि उससे क्या है, अशांति बनती है, नेगेटिविटी फैलती है और डेवलपमेंट रुकता है। लेकिन अब देख रहे हैं कि अब पिछले 10-15 साल से, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, बिल्कुल अब हर क्षेत्र में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, सांस्कृतिक विरासत को बचाने में, हर चीज़ों में अब काफ़ी तेज़ी से तो बढ़ता जा रहा है। नंदी जी, जैसे प्रमोद जी कह रहे हैं कि अभी जो सरकार आई है उसके बाद में सभी आयामों में प्रगति हुई है, बहुत लोग इससे असहमत भी होंगे, और जब आप आंकड़े देखेंगे जो बेरोजगारी के हैं, तब भी वो प्रमोद जी की बात की सहमति नहीं दिखाएंगे। बट स्टेइंग विद द एजुकेशन साइड ऑफ इट, और जिस तरह की बात आपने भी कही, मैं भी उस तरह का उल्लेख कर रहा हूँ, एंड वी लुक अप टू भारत as all encompassing or inclusive entity which is more focused on the knowledge of the self, and everything stems from there, where you embrace everyone with love, and there is, as Vedanta philosophy propounded by or shared by Swami Vivekananda, a sense of oneness prevails. But leaving that part aside, the way and this present government is also referred again and again in the Western media, especially, as Hindu nationalist government. So the way academic circle here in America, or even elsewhere in India also, the reference of caste becomes a way to refer to what we are referring to Sanatan or Hinduism, and so they start criticizing on the lack of human approach in this glorious tradition, and so that requires a very in-depth understanding and communication. How that can be accomplished? Are we moving in the direction of making the culture of India understood within the parameters of Indian Constitution? The way I understand it was, when India got independence, Pandit Nehru, along with Mahatma Gandhi, in the true spirit of Hinduism, in the true spirit of the consciousness of Bharat, saw that 80% of the population was Hindus and 20% were Muslims. So they wanted to make sure that nothing wrong happens to this minority. So they went overboard to make sure this 20% is always accommodated, is always given privilege, is always taken care of. And that's why they were paid for their Hajj visits. That's why they made some reservations for the lower caste people in order to accommodate it. Then what? But life is always dynamic. In life, there is always momentum, and changes will continue to happen.
As a result of the dynamism, the current government say, let us balance out everything. It is the current government is not a Hindutva government. The current government do not say that Hindus have to be preferred over the Muslims, or as the Western media would love to say. The current government is saying we absolutely appreciate the reservation, but in the process, let us not deprive the majority of some basic rights. And I think that has been exaggerated by the Western media and highlighted very wrongly. It is, people have to see where the country, when they got the independence, where the country was, and how the leaders at that time did their best in the true spirit of Hinduism, in the true spirit of Bharat consciousness. We always take care of our guest first, we always take care of the minority first, and continue to do that. And this is the byproduct of that whole Bharat consciousness so beautifully laid out by you. I think I would have, yeah, I appreciate the way you have explained it so nicely. I think in simple words, this is the best one can say. Being considerate, you give more importance to others, and when there comes a stage that you find your space is shrinking, then you have to ask that, no, I cannot go further. So something like that probably is what he's suggesting. Pramod, do you agree with him? That is one question. And secondly, when you start doing that, when I say doing that, meaning you start claiming that this much is the line that I want to draw so that you respect my symbols meaning the Sanatan symbols, etc. That causes a kind of disruptive sort of environment, because you are you are used to having a scene where getting pushed is the norm. But if you said no more, now how this dynamics is playing out in India at the moment while we are observing our Republic Day? अशोक जी, मैं दीपक जी की बातों से, डॉक्टर दीपक की बातों से एग्री करता हूँ। और देखिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अतिथि देवो भव अगर हमारे इस कॉन्सेप्ट्स में है, सनातन और हिंदू, वी गो हिंदू इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इज़ नॉट अ रिलीजन। एक कॉन्सेप्ट है, सेकुलर कॉन्सेप्ट है जो राम राज्य से चला आ रहा है। तो जब अतिथि देवो भव की वजह से हमने जब सभी लोगों को अपना माना, जो लोग माइनॉरिटी में थे उनको भी अपना माना, एक्स्ट्रा उनको रिजर्वेशन दिया गया कि लेट्स कम टू दैट लेवल। जब वो आ गए, अब somebody is a very poor, somebody is not able to have all the financial challenges, तो वो पूरा का पूरा रिजर्वेशन प्रोसेस था उस समय जो सोच करके जो बनाया गया था आज़ादी के समय में। तो डेफिनेटली डायनेमिक जो हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसके हिसाब से इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा है कि देख रहा हूँ उसका मिसयूज भी होता है। और कॉन्सेप्ट में तो कहीं एक्सट्रीमिस्ट तो हमारा है ही नहीं, तभी तो भारत में जितने भी अलग अलग रिलीजन के लोग हैं सब आनंद से रहते हैं। बाकी जो मीडिया में जो एक मतलब टीआरपी के लिए कह सकते हैं या फिर एक भारत को बदनाम करने के लिए जो बनाया जा रहा है वो एक अलग चीज़ है। वो हर एक जगह होता है, यूएस में भी होता है, वो यहाँ पे ब्लैक वाइट का आप देखते हैं इस तरह से। लेकिन क्या है, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कभी ऐसा हमने तो नहीं देखा है, और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो अब क्योंकि हम राजनीति और वर्तमान भारत की बात करने पर आ गए हैं, तो डॉक्टर नंदी जी, again and again there are news reports in Western media, as well as there are some Indian intellectuals who blame, including opposition leaders, blame RSS and Prime Minister Modi on spreading a kind of environment which makes it uneasy for minorities to live. And as Pramod was mentioning, a lot of discussions in the media are happening where you have reference of Hindus and Muslims, and so people say that this is causing a sort of a division in the society. Do you agree with this perception, and what is the other way? And allow me to sort of add one more line. While we are near India's Republic Day, we want to see India moving as one nation, and
from the point of view of having a sense of mutual respect and understanding, is there anything else that comes to your mind which should be incorporated by politicians, intellectuals, and media also? India has been fortunate, and I always say the leaders of either party have always done their best to govern India in the best possible way during the time that they were leaders. I never see that Pandit Nehru or Lal Bahadur Shastri Ji or Atal Bihari Vajpayee or even Manmohan Singh did anything to hurt India. I have a deep respect for all the leaders, and they did their best. Now, at the same time, one has to be aware that politics, at the same time, is a little bit of a dirty game because they have to win the election, and therefore they have to dramatize what might not be true. The current government absolutely is totally conscious and totally aware of the rights of the minority. They are totally aware how everyone has to be taken care of. And the basic concepts of RSS are always reflected on, but are never implemented on the day-to-day rulings. This is clearly evident what happened in the Maharashtra election. One feels that BJP, the party, the current ruling party, and the current rulers, basically, the Prime Minister, the Home Minister, are totally aware of the rights of individuals. Absolutely. The beauty of the leaders of India are that they are so educated. So India is a vast nation, 1.4 billion people. They have always selected the right leader. And whatever it was called for during that particular period of time, they were the best. And they were So I think that is the best approach. Wherever we were at that time, that was right. Where we are right now, that is the right. This is how you move forward collectively. And in that context, taking some of the examples where Indian spirit or Bharatiya Chetana, which is relevant and uplifting for everyone, is proven by wholehearted acceptance of the suggestion of International Day of Yoga. And the significance of yoga as is accepted by the world is also a testimonial of the universal nature of Bharatiyata or Bharatiya spirit or जो Indian consciousness है. How do you see yoga has played an important role in your life also? Share your relationship with yoga as well as the importance of this knowledge of yoga which is rooted in Indian culture being shared by the world. थैंक यू अशोक जी. डेफिनेटली योग का मतलब यूनियन मतलब हारमोनी, सिंक्रोनाइजेशंस. ये भारत के जो हेरिटेज में, हमारे जो ट्रेडिशन में आज से नहीं, ये हजार वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा चली आ रही है. पर्सनली आई बॉर्न इन बिहार मुंगेर and I was connected with Bihar School of Yoga. That is one of the jam institutes in all over the world. So I was sitting in front of my guru in late 70s, and then I was like 12 years old, and that time his Guruji was mentioned one statement. जब पूरी दुनिया में पूरी त्राहिमाम होगी, पूरा दुनिया दुखी होगा लड़ने में, झगड़ने में, एक दूसरे का लेग पुल करने में, तो उस समय भारत के उदय का वो समय आ जाएगा. और आप देखना कि यही योग जो है पूरी दुनिया को आपस में जोड़ेगा, यूनियन बनाएगा, भारत को पॉजिटिविटी की तरफ ले चलेगा. यही तो भारत का सार है. So, yeah, sorry, we just have few more minutes, and I'll also refer to another important area where the whole world is paying attention to this Indian spirit. और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता रहा कि जो योग है उसका संबंध आप क्या खाते हैं उसके साथ भी है. So, Dr. Nandi, being a doctor yourself, as well as the significance of right food, it plays well for the way we think, is another Indian concept which of course is relevant for everyone.
And this year, United Nations has declared as Year of the Millet, which is also as per the suggestion or advice of Indian Prime Minister of India. Talk to me about the importance of making millet as a part of your food intake, its impact on your health and overall on harmony. Yeah, I'm fortunate to be a graduate of the All India Institute of Medical Sciences, from where I did my MBBS. We were always taught that body, mind, and soul all plays together in the health of a welfare of a human being. The role of millet is so important, as you put me on that focus, because it has the right amount of carbohydrate, right amount of protein. It is totally vegetarian. It has the right amount of fiber. It is anti-carcinogenic in the GI tract, and it gives excellent nutrition in the form of good proteins and calories. So, and it is very rich with vitamins and minerals. But I would like to, in the spirit you are talking about yoga, I would like to just add one thing, one sentence from Rabindranath Tagore, the famous poet, said, "In the midst of all the stars, in the midst of all the light of the stars and the moon, you still need a lamp in the evening to lighten, to invite God to your house." So India has always been that. That is why we celebrate Diwali with such enthusiasm. That light, that lamp, be the lamp inside our soul, so that we can hug everybody, so that we can include everybody. Absolutely. And that is what only I have to say. Absolutely, I appreciate that. And if I rephrase what he said, with your permission, Pramodji, in India, the tradition of Guru Shishya Parampara, so a consciousness connects with consciousness and enlightens. As his name is also Dipak, so he talks about light. And as we are talking about light that brings a sense of pride in our heart, 23rd January this year was specially more relevant and significant, the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose, when Prime Minister Narendra Modi dedicated memorial, and Andaman Nicobar Island are also now a kind of source of additional inspiration, with names of 21 islands in the name of Paramveer Chakra recipients. While we are delighted that Indian Constitution have provisions to sustain and promote that eternal consciousness, which is all encompassing and which is a source of love and a sense of oneness, continues. And while we celebrate this structure, which helps in sharing, spreading, and cherishing those values which are necessary for the complete evolution or development or growth of a man. I appreciate presence of Pramod Bhagatji to our studio, President of World Peace and Health Foundation, community leader Dr. Dipak Nandi. Thank you very much for joining us. Thank you very much. And Bharat Mata ki jai and happy. और पराक्रम दिवस you very much. भारत मना रहा है सुभाष चंद्र बोस जी के 23 जनवरी को जो हमारा So birthday thank था। you very much. Take care. Namaste. Thank you.